Good morning. Now we are going to start about the cellular level of organizations. That means we are talking about the cell. I know you know about the cell because cell is a very common term, and it is the basic of biology. Okay? So, what is the cell and the component of the cell? These are the lots of the things we are going to discuss. But before discussing the cell, we must understand it. What is the objective? What will be the learning outcomes after study the cells? What would be the outcome of this topic, and why we are studying the cells? So, if we see the first, the scope of cell, the scope of this topic. So, this subject is designed to impart the fundamental knowledge on the structure and function of the cell and their organization. So if you understands about the cell, then you will understand about the every organ function and their anatomy. That means the anatomy and physiology, structure and function, both, and how they organized. You will know it by studying the anatomy and physiology of the cells. You can understand the how the homeostasis is balanced by the cell. The objective upon completion, you can understand the structure and function of the various organ of the human body. You can describe a different type of the cell present in the human body, and how the cell are contributed to each other among themselves for a proper functioning of the body, proper functioning of an organ. So these things, because organ is composed of the tissue, and tissue is a group of the cells, so you will know that a cell having some specific function. So there are the different type, the multicellular organ is there. So how these cells are going to perform their function by which it will make a complete organ. After studying this chapter, after studying this topic, you'd be able to describe the structure and function of the cell membrane, how the materials are passing from inside cell to outside the cells. You can describe the various cytoplasmic organelles. You can understand and you will explain. You can understood lots of the things like the content of the nucleus, DNA replications, building the proteins, DNA codes, cycle cell in order, step of the cell division in somatic cells, and how a cell differentiate and become the more specialized. So these all things you will understand after this topic. Now let's start cell. Sorry, cell structure and functions. The first things. So we will start from the cell theory. All living things are made up of the cell. We know that a living thing is composed of or made up of the cell. It could be unicellular, it could be multicellular. या तो ये एक सेल से बनी होगी, यूनिसेलुलर बोलते हैं जिसे हम, या तो ये बहुत सारे सेल से बनी है जैसे मल्टीसेलुलर, जैसे ह्यूमन बींग्स, और यूनिसेलुलर जैसे बैक्टीरियाज. Cell are the smallest working unit of all living things. All cells come from the pre-existing cell through the cell division. These are the basic fundamentals. So cell will derived through the pre-existing cell by the cell division. So when the one cell is going to divide into the two daughter cells, okay. So these cells are going to replicate, going to division. So in a simple words, we can define a cell. A cell is the smallest unit that is capable of performing the life function. And cytology, cyte means cell, and logy means study. It is a branch of the science concerned with the study of cell. So साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम
सेल की स्टडी करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड साइटोलॉजी। ओके, सो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं उसे साइटोलॉजी कहते हैं। एंड व्हाट इज सेल? Cell is the smallest unit that is capable of performing the life function. The smallest unit of life. In simple words, a smallest unit of life that is capable for performing the functions. Cell is a basic unit and it becomes specialized. So when the cell are grouped together, tissue, so the similar cells working together to perform a specific function, it is a group of the cell that will be called tissue. And when the tissue, a different type of the tissue working together to perform a specific function, it could be organ. Okay, so cell is a basic unit hai, and become the specialized when there is a different cell. Okay, where more than one cells are combined together to perform a specific function, it called a tissue. When more than one tissue are combined together and to perform a specific function, it called be organ. And when more than one organ, different organ, working together to perform a specific function, it will be called organ system. It will be called a system like digestive system, respiratory system. Okay, and when these systems are combined together, are working together, it will be called a organism. Okay, सो सबसे पहला बेसिक क्या था हमारा? सेल था। जब एक से अधिक सेल जो एक साथ काम कर रहे हैं, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन काम कर रहे हैं, it will be called tissue. Then tissue will be grouped organs, organ will be grouped, become the organ system, and the system will group, become the organism. Now you will see that structure of the cell. Cell is a structural and functional unit of human body, we know. It will contain the three major components: nucleus, cytoplasm, and cell membrane. So when you will see the structure of the cell, then you will understand the cell having the word nucleus in the center, a cytoplasm, and a cell membrane. And the function of the cell, like the production of bioenergy, storage, multiplication, and the specific functions according to location. Now there's a different parts of the cell. For ease of study, we divide the cell into three main parts. For ease of study, we divided the cell into three main parts: plasma membrane, cytoplasm, nucleus. So that will make it easy to understand. If you are going to understand about the cell, so we are going to classify it, we are going to divide it into the three components, three parts: plasma membrane, here you can say the cell membrane, cytoplasm, and the nucleus. So first is the plasma membrane. Plasma membrane forms the cell flexible outer surface. Plasma membrane will form the cell flexible outer surface, separating the cell internal environment from the external environment outside the cell. So if you know what will be the cell membrane, membrane means that it surroundings the cell, membrane that wrapped surrounding the cell, so it is cell membrane. And cell membrane will act like a barrier, and it will give the separate the internal environment from external environment. सेल के अंदर का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, जो इंटरनल कंटेंट्स हैं, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल कंटेंट से सेपरेट रहेंगे, क्योंकि बीच में क्या है? मेम्ब्रेन है. ओके, एंड दिस मेम्ब्रेन इज आल्सो एक्ट लाइक अ बैरियर. दैट मीन्स no substance, nothing can be go out of the cell or come in the cell. जब तक सेल मेम्ब्रेन है, जब तक वो परमिट नहीं करेगी, वो अलाउ नहीं करेगी, तब तक कुछ भी ना सेल के अंदर आ सकता है, ना सेल के बाहर जा सकता है. क्यों? क्योंकि क्या है? सेल मेम्ब्रेन है.
सेल के चारों तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को बाहरी दुनिया से अलग करती है। ठीक है, सेल के जो अंदर की दुनिया है और सेल की जो बाहर की दुनिया है, इसके बीच का एक लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So it also acts as a selective barrier that will regulate the flow of material into and out of the cell. So this selectivity helps to establish and maintain the appropriate environment for normal cellular activity. Okay, this selectivity help establish and maintain the appropriate environment for normal cellular activity. So that is the reason cell having these separate things. So their environment, their cellular activity will be established and it is working in a proper manner. Otherwise, what will happen? अगर सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता तो क्या होता? सेल के अंदर का कोई भी कंपोनेंट, कोई भी ऑर्गन, इवन साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनेल्स हैं, ये अपने आप जब मन करता बाहर चले जाते हैं। बाहर की कोई भी चीज अंदर आ जाती। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक सेल मेम्ब्रेन है जो अंदर की चीज को बाहर नहीं जाने देगी और बाहर की चीज को अंदर नहीं आने देगी। ओके, जब तक कि वो परमिट नहीं करते किसी प्रॉपर चीज को। सो रेगुलेशन ऑफ जो फ्लो है, जो चीजें फ्लो हो रही है उसको रेगुलेट करने का काम कौन कर रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहा है। इट विल रेगुलेट द फ्लो ऑफ मटेरियल, जिसके कारण सेल अपना एक प्रॉपर फंक्शन मेंटेन किया हुआ है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो प्ले अ की रोल इन कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स बिटवीन द सेल एंड देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब सेल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है? Only the plasma membrane is there that is in the contact with the external environment. So plasma membrane will also play a role in the communication with, between the cell and the external environment. Now cytoplasm is there. It consists of all the cellular contents between the plasma membrane and the nucleus. अब सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सबसे अंदर न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के जो कंटेंट है, that will be cytoplasm. So all the cellular content between the nucleus and plasma membrane is a cytoplasm. Now this cytoplasm is having divided into two components, cytosol and organelles. साइटोप्लाज्म क्या होता है? इसमें साइटोसॉल होंगे और ऑर्गेनेल्स होंगे। साइटोसॉल आर द फ्लूइड्स। साइटोसॉल इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। कंटेन्स इसमें वाटर्स होंगे, डिसॉल्व सॉल्यूट्स होंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे दैट विल सराउंडेड बाय द साइटोसॉल। surrounded by the cytosol or the several different type of organelles। और इसी साइटोसॉल में ही कुछ डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होंगे जो छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं सेल के अंदर, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी। ओके, so these are the little organs that will be present inside the cell and where in the cytosol। साइटोसॉल में क्या होते हैं? डिप्ट होते हैं, सराउंडेड होते हैं, घिरे हुए होते हैं उनसे। तो सबसे पहले तो हमने ये समझा कि सेल के बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परत है और अंदर न्यूक्लियस है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी चीज को अंदर नहीं आने देगा और बाहर नहीं जाने देगा। तो ये सेपरेट करता है सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ओके, तो सेल इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विल बी सेपरेटेड बाय दी this plasma membrane। It will also regulate the flow activity। Now between the plasma membrane and nucleus there is a cytoplasm, and this cytoplasm having the two components, cytosol and organelles। So इनके बीच की जितने भी fluids हैं, all fluids is called the cytosols, जिसमें वाटर्स होंगे, डिसॉल्व सॉल्यूट्स हो सकते हैं एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे। और इसी साइटोसॉल में प्रेजेंट होंगे लिटिल ऑर्गन्स दैट विल बी कॉल्ड द ऑर्गेनेल्स। So each type of organelle has a characteristic shape and specific function। Example include the cytoskeleton, ribosomes, ER, Golgi complex, lysosome, peroxisome, mitochondria। Or every organelles have their particular shape, their characteristic shape,
देयर स्पेसिफिक फंक्शन जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जैसे साइटोस्केलेटन की बात करें, राइबोसोम्स की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की बात करें, इनके अपने 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 अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे और अलग अलग फंक्शंस हैं। Okay, so and these are called the organelles. Third will be nucleus. Nucleus is a large organelle that houses most of the cell DNA. जो cells के जो DNA होते हैं वो किसमें होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे। Within the nucleus, each chromosome, a single molecules of DNA associated with several proteins, contain thousands of hereditary units called the genes that control most aspect of the cellular structure and function. That is a nucleus in the center that will control all the activities of the cell. सेल की जितनी भी एक्टिविटी है वो कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस करेगा। एंड दिस न्यूक्लियर विल हाउसेस द डीएनए, ओके, एंड द जेनेटिक मटेरियल। सो जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं, जो जेनेटिक कोड्स होते हैं, जो हेरिडिटरी यूनिट्स होती हैं, दैट विल बी हाउस इन द न्यूक्लियस। नाउ organelles, we just define the organelles. Organelles are the permanent structure with characteristics morphology that are highly specialized in a specific cellular activity. Organelles क्या होंगे? Organelles are the permanent structure. एक structures होंगे inside the cell having their unique and specific morphology, appearance होगा, characteristics होंगे, and they have the specific function that will play an important role in the cellular activity. So that will be organelles. There are some cell inclusions will be there. सेल इंक्लूजन आर द सिक्रीशन एंड स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ द सेल। सेल के जो सिक्रीशन है और स्टोरेज प्रोडक्ट्स हैं, दैट विल बी कॉल्ड इंक्लूजन। एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल आर आल्सो रेफर्ड एज द मैट्रिक्स व्हिच आर सब्सटेंस एक्सटर्नल टू द सेल सरफेस। जो सेल सरफेस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो होती हैं उसके सराउंडिंग्स जो एक्सटर्नल मटेरियल्स होते हैं, या इसको आप एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स कह सकते हैं, जो सेल के बाहर मटेरियल होते हैं, दैट विल बी कॉल्ड द मैट्रिक्स। You can see the structure of the cell here, then you will understand they have the nucleus in the center, then cytoplasm, and surrounding is the cell membrane or plasma membrane. Nucleus having the chromatin, nuclear pore, nuclear envelope, and the nucleolus. In the center of the nucleus there is a nucleolus. Glycogen and granulose is there, then cytoplasm is there. In the cytoplasm, the cytosol plus organelle, except the nucleus. We are not talking about the nucleus. In the cytoplasm, it's divided into two parts: cytosol and organelles. Okay, organelles like the rough endoplasmic there is there, rough endoplasmic reticulum, ribosome is there, Golgi complex is there, microfilament is there, microtubules, mitochondria, peroxisomes, smooth endoplasmic reticulum, lysosome, secretory vesicles, and the centrioles, peritubular material is there. These are the centromere, microfilament having, and you can see the surrounding is the plasma membrane, outer layer. Microtubules and the microfilament, intermediate filament, these are act as a cytoskeleton. Now, there's a different examples of the cell like the amoeba, proteus, plant stem, bacteria, red blood cell, nerve cells. ये सारे cells के बने हुए हैं. Every cell is a basic unit of life. So, you know, when the human body will be developed from the union of the sperm and ovum, that is the first cell of the human body. Then it will gonna to convert into the group of the cell, then tissue, then organ, then system, then body. Now, you know, according to that, we have the different system like muscular system, skeletal system, digestive system, respiratory system. Muscular system, जिसमें muscles डिस्कस करते हैं. Skeletal system is composed of the skeleton, bones. Digestive system, it contains the digestive organ like the esophagus, stomach, mouth, GIT. Respiratory system helping the respiration में जिसमें lungs, bronchioles, trachea, nose. सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन की बात की जाएंगी, हार्ट्स की बात की जाएंगी. एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें किडनी की बात की जाएगी, डिस्कस अबाउट द किडनी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स की बात की जाएंगी. नर्वस सिस्टम,
नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स की बात की जाएंगी, एंड एंडोक्राइन सिस्टम, डिस्कस अबाउट द हार्मोन्स. Now, two type of the cell is there. It could be prokaryotic cell और यूकैरियोटिक सेल. या तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे या फिर यूकैरियोटिक सेल्स होंगे. प्रोकैरियोटिक अगर होते हैं, प्रोकैरियोटिक डू नॉट हैव द स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन्स. प्रोकैरियोटिक डू नॉट हैव द स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन. इसमें वो स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं जो मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं. फ्यू इंटरनल स्ट्रक्चर्स होंगे. वंस कॉल्ड द ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया. Prokaryotic. You can see the ribosome is there, flagella is there, nuclear DNA is there, cell membrane, capsular and cell wall. So all things are scattered inside that. So इसमें सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेंगे आपको प्रोकैरियोटिक्स में. While in eukaryotics contains the organelle surrounded by the membrane. और यूकैरियोटिक्स में कौन से होंगे? Eukaryotic will contain the organelles that is surrounded by the membrane, like us. In our cell body, you can see inside the cell there is a different organelles, as I explained earlier. Mitochondria is there, so mitochondria is surrounded by their own layers. Endoplasmic reticulum have their own structure, so every one there is own structure and they are surrounded by some layers. While in the prokaryotics किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते हैं. So eukaryotic contains the organelles जो surrounded होंगे by the membrane से. Most of the living organisms like the plant or animal will be there. Animal cells की बात की जाए, plasma cell membrane, endoplasmic reticulum, nucleus, ribosomes, Golgi body, mitochondria, lysosome. Plant cell की discuss की जाए तो plant cells look like this. So what will be the major difference between the animal cell and plant cell? Animal cell और plant cell में क्या difference है फिर? Now see, what is the difference between the animal and plant cell? Animal cells are generally small in size. जो animal cells होते हैं, that is generally small in size, while plant cell are larger than the animal cell. जो plant के cells होते हैं, वो larger होते हैं किसे? Animal cells. Animal cells are small in size. In animal cell, cell wall is absent. While in the plant cell, the plasma membrane of a plant cell is surrounded by a rigid cell wall of cellulose. Animal cell में cell wall नहीं होगा, plant cell में होंगे. See the structure. Plant cell is the cell wall, is the outer layer, then cell membrane. While in the animal cell, plasma cell membrane, no cell wall. So cell की wall नहीं होगी, but plasma membrane होगा. Animal cell, except the protozoan Euglena, no animal cell possesses the plastid. So एक प्रोटोजोआन यूग्लिना को छोड़ के कोई भी ऐसा एनिमल सेल नहीं है जिसमें प्लास्टिड्स होंगे, बट प्लांट सेल्स में प्लास्टिड आर प्रेजेंट. इन एनिमल सेल्स, वैक्यूल इन एनिमल सेल्स आर मेनी एंड स्मॉल. बहुत सारे वैक्यूल्स होंगे और स्मॉल होंगे. बट इन प्लांट सेल, मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल हैव अ लार्ज सेंट्रल सेप वैक्यूल्स. इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होंगे. Animal cell have a single highly complex Golgi, while plant cell have many simpler unit and prominent Golgi apparatus that will be called the dictosomes. Animal cell have centrosome and centrioles. Animal cell में centrosomes भी होंगे, centrioles भी होंगे. Plant cell में centrosome और centrioles नहीं होते हैं. Centrosome and centrioles. Okay, we will discuss further what will be the centrosome and centrioles. While you can see the name of the centrosome and centriole in this structure. Centrosome, that is the peritubular materials, and centriole structure are there. So these two structure will be not present in the plant cell, while these two structure will present in the animal cells. Now come to the organelles and different cell parts. Cell membrane. Cell membrane is the outer membrane of the cell that control the movement and out of the cell. So movement in and movement out, that will regulate the flow of materials in and out of the cells. It is a cell membrane. It will be a double layer. Cell walls will be there. Most commonly found in the plant cell and bacteria. Plant cell में होंगे, bacteria में होंगे. Support करेंगे, protect करेंगे cells को.
it surrounds the plasma membrane. So plasma membranes के surrounding में भी एक अलग से layer हो जाएगी wall, that will be called cell wall. Now inside the cell, you will see the inside the cell there is a nucleus. Direct cell activities. Nucleus is targeted, is regulate, is control the all cell activities, and it will be separated from cytoplasm by the nuclear membrane. This nucleus is having the another layer their surrounding that will be called a nuclear membrane. So nucleus it's separated by this from the cytoplasm. जैसे ठीक वैसे ही जैसे सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण सेपरेटेड है किससे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. Cell membrane, yeah, you can say the plasma membrane separated these cells from the external environment. Same way, there's a nuclear membrane that separate the nucleus from the cytoplasm. It will control center of the cell का control center होगा, double membranes होंगे, that will contains the genetic material DNA. This will contains the chromosomes and the nucleolus. So इसमें chromosomes होंगे और nucleolus होंगे. Now nuclear membrane की बात की जाए, that is the surrounding layer of the nucleus. It will surround the nucleus made of the two layer. Opening allow the material to enter and leave the nucleus. So when it will allow the materials can be enter inside the nucleus and can be leave the nucleus. Chromosomes present in the nucleus made of the DNA contain the instruction and the traits and characteristics. It's hereditary. Okay, that will contains the hereditary characteristics. Nucleolus. Inside the nucleolus, inside the nucleus, there will be a contain RNA to build the proteins, and most cell have two or more nucleolus. Cytoplasm is there, gel-like mixture, viscous fluid containing organelles, surrounded by the cell membrane. Cytoplasm जो होंगे वो किससे surrounded होंगे, cell membrane से होंगे. Contains the hereditary materials, component of cytoplasm like the interconnected filament and fibers, fluids होंगे, cytosols होंगे, organelles होंगे और स्टोरेज सब्सटेंस होंगे. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प टू मूव द सब्सटेंस विद इन द सेल. Cell can move the inside of this substance can move inside the cell with the help of ER, and it is a network of interconnected membranes. That is the two type, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. If ribosomes are present, it will be rough, and if not present, then it will be a smooth endoplasmic reticulum. Ribosome is the each cell contains the thousands of ribosomes that will make the proteins found on ribosomes and floating throughout the cells. Mitochondria की बात की जाए, another organelles of the cell have their own DNA. Mitochondria के पास अपना खुद का DNA होगा, and it is bound by the double membrane, produce the energy through the chemical reaction, breaking down the fats and carbohydrates. Control level of water and other materials in the cell. सेल के अंदर वाटर और अदर मटेरियल्स की लेवल को कंट्रोल करते हैं. Recycles and the decomposes the protein, fat and carbohydrate. प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को रिसाइकिल और डिकम्पोज करेंगे एंड रिलीज द एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी. गोल्जी बॉडी की बात की जाए, प्रोटीन पैकेजिंग प्लांट. इट मूव्स द मटेरियल विद इन द सेल. सेल के अंदर मटेरियल्स को मूव करने में हेल्प करेंगे एंड मूव द मटेरियल आउट ऑफ द सेल, और सेल मटेरियल्स को सेल के बाहर भी मूव करने में हेल्प करते हैं. इट इज कॉल्ड द पैकेजिंग प्लांट. लाइसोसोम. Lysosome contains the digestive enzyme add in the cell renewal, जो cell renewal में भी help करते हैं. break down the old cell, पुराने cells को break down करेंगे और digest करेंगे inverters को. If there is any invaders, dairy microbes, dairy waste materials will be there, waste substance will be there, then it will be causes to digest them. Transport the undigested material to the cell membrane for removal, और जो undigested material होंगे and they have to transport it to the apical surface on the cell membrane surface, and then it could be removed. Vacuoles होंगे, as like I told you, in the animal cell there is a many small vacuoles, while in the plant cell large vacuoles.
Vacuoles are the membrane-bound sacs for storage, digestion, and waste removal. ये बाउंड सैक्स होंगे स्टोरेज के लिए, डाइजेशन के लिए, वेस्ट रिमूवल के लिए, एंड मोर कॉमन प्लांट देन एनिमल्स, कंटेन द वाटर सॉल्यूशन, हेल्प प्लांट मेंटेन द सेफ और मेंटेन और सेफ मेंटेन भी करने में ये हेल्प करते हैं. Chloroplast is there. We know chloroplast will present in the plant. Usually found in plant cells. Contains green chlorophyll, where the photosynthesis take place. Now, we have the more things to discuss about here. Like transport across the cell membrane. Now, how is it possible to transport across the cell membrane? सेल मेम्ब्रेन जो हमारी है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सराउंडिंग्स में, उनके थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है? How it will occur? So transport of material across the plasma membrane is essential to the life of cell. Certain substance must move into the cell to the support material metabolic reaction, and other substance that have been produced by the cell for the export or cellular waste product and must move out of the cell. So transport process is a different process. Transport mechanism is a different mechanism. So we will discuss the transport across the plasma membrane will be next class. Now today we discussed about the lots of the thing about the cell. What will be the cell? What will be the cell organelles, nucleus, and the different organelles of the cell, obviously. Now we are going to see the quiz. So the question was first, which structure within the cell produces ATP? Which structure within the cell produces ATP? Adenosine triphosphate. Mitochondria, nucleus. क्या mitochondria करता है? Just we discussed one slide earlier that mitochondria having their own DNA and it will release the ATP. So yes, mitochondria is correct answer. Why peripheral proteins is not, endoplasmic reticulum is not, nucleus is not. Next question. Except for one, the following are type of cell. Which one is not a type of cell? Except for one, सिर्फ एक को छोड़ के. The following are the types of cell. बाकी सारे cells हैं. कौन सा इसमें से सेल नहीं है? Platelets, leukocyte, macrophages, or osteoblasts. So answer A is correct. Which of the following is not an example of the cell? इस following जो four options है, इसमें से ऐसा कौन सा है? Which of the following is not an example of the cell? सेल का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा नहीं है? मैक्रोफेजेस नहीं है, और यू कैन से लाइसोसोम नहीं है. मैक्रोफेजेस, लाइसोसोम, प्लाज्मासाइट्स और कॉन्ड्रोप्लास्ट. Which of the following is not an example of the cell? Now we have to find out which one is not a cell. इसमें से ऐसा कौन सा है जो सेल नहीं है? There's the fourth option is there. Now we have to think it. So if you consider the macrophages are there, macrophages are the cell which will help in the phagocytosis. So A is incorrect. Plasmocytes having the cells. Chondroblast is the cells. But lysosomes. Lysosome is not an example of the cells. It is a organelles. Next question. Which cell organelles contain an acidic environment capable of digesting a wide variety of molecules? ऐसा कौन सा organelles है जो acidic environment contain करता है और capacity रखता है किसके molecules को digest करने का? So you will see the lysosome is there, ribosome is there, centrosome or Golgi complex is the lysosome is the thing that having the acidic environment and causes the digestion of the different various substance. So answer A is correct. Next question, like which of the following is not a part of the plasma membrane of cell? Which of the following is not
पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इसमें से कौन सा ऐसा है जो पार्ट नहीं है? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है हमारे पास। इंटीग्रल प्रोटीन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स नीड द प्रोटीन, सो प्रोटीन इज होगा। ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होंगे, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होंगे, बट पेरिफेरल प्रोटीन्स होंगे, प्लाज्मा प्रोटीन इज नॉट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट्स कौन सा नहीं है? प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं है। प्लाज्मा प्रोटीन आर द प्रोटीन्स दैट विल प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड सेल्स। Albumin, globulin, fibrinogen, these are the plasma protein present in the blood cells. So C is correct. Next question, like a major role for mitochondria is to. A major role for mitochondria is to. Mitochondria का major role क्या हो सकता है? A. Transcribe the information in DNA, deoxyribonucleic acid, produce ATP, synthesis protein from amino acid, use the enzyme to lyse the molecules. या तो ये ट्रांसक्राइब करेंगे इंफॉर्मेशन डीएनए में, या एटीपी के प्रोडक्शन में है, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस में है विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड्स, या फिर एंजाइम को लाइस मॉलिक्यूल्स। ओके, सो मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज वेल नोन फॉर द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों? व्हाई इज इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज इट विल रिलीज द एनर्जी बाय द केमिकल रिएक्शंस। There's a chain of the chemical reaction occurred in the mitochondria that will be released the ATP, adenosine triphosphate. So answer B is correct. What is the role performed by mitochondria? Mitochondria द्वारा कौन सा रोल परफॉर्म किया जाएगा? Contain enzyme capable of digesting molecules. क्या ऐसा एंजाइम्स कंटेन्स करता है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट किया जा सके? प्रोड्यूस एटीपी, synthesis the protein, and synthesis the fatty acids, phospholipid and cholesterol. So you know mitochondria, when the mitochondria names comes, that is the production of ATP. So yes, answer B is correct. A major role for mitochondria is to. Mitochondria का major role क्या होगा? Synthesis the fatty acid and phospholipid and steroid, deliver the lipid and proteins to the plasma membrane of for secretion. Mitochondria cannot deliver the lipid and proteins to the plasma membranes to release from the cell, to secrete from the cell. Synthesis of the protein from amino acid is a part of the ribosomes. Production of ATP is the answer. So answer D is correct. What is the role of mitochondria? What is the role of mitochondria 2? अब माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें क्या रोल है? कौन सा रोल है? टू फंक्शन इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सिंथेसाइज द प्रोटीन्स, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फॉर्म पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट फॉर्म करता है, टू फॉर्म द पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सिंथेसाइज द फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड एंड स्टेरॉइड्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल हो सकता है इसमें से? सेल डिवीजन में का कोई काम नहीं होता है, सिंथेसाइज प्रोटीन से भी हेल्प नहीं करेंगे। सो इट विल प्ले to form a part of the plasma membrane. So answer C is correct. Now the last option. Which organelles is the site of ATP production? ATP production कहाँ से होता है? न्यूक्लियस से होगा। Which organelle is the site of ATP production? It is nucleus. Nucleus is the center part of the cells that control all the cellular activities. Contains nucleolus, contains genetic material like the DNA, chromosomes, contains the genetic code is genes will be contained. It could second endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum will help to move the substance within the cell. It will contains the ribosome, so it's a rough endoplasmic reticulum, or it will be
Ribosome will not present, so it will be smooth endoplasmic reticulum. Golgi apparatus is also not an option for the ATP production. It will Golgi apparatus is also move the substance, help to move the substance to in a cell and out of the cell. Mitochondria is the right answer. So mitochondria is work as the powerhouse of the cell. So yes, mitochondria is the site for the ATP production. Okay. So in this topic, in the cell, we understand that what is the cell. Cell is the basic unit of life. सेल जो होती है ये लाइफ की बेसिक यूनिट्स होती है. Now these cells are produced by the pre-existing cells by the cell division. सेल बनती कैसे है? एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से सेल बनेगी बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. जब सेल का डिवीजन होगा तो एक सेल से दो नई सेल्स बनती हैं. दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. So a cell having the three components, cell can be divided into three components. The outer is the plasma membrane, सबसे बाहर की जो परत होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म और फिर सेंटर में न्यूक्लियस. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सराउंडिंग्स जो लेयर है सेल के, उसका क्या काम होगा? एक सेपरेट करना. किसके? सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करना. एंड रेगुलेट करेगी किसके? मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स या फ्लो ऑफ द मटेरियल्स, फ्लो ऑफ द सब्सटेंस. जो सब्सटेंस मूव कर रहे हैं सेल के अंदर या सेल के बाहर, उनको रेगुलेट करने का काम करेगी. इसके बाद बीच में आता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, साइटोसॉल एंड ऑर्गेनेल्स. जो भी फ्लूइड्स में अवेलेबल है, दैट विल कंटेन्स द वाटरी फ्लूइड्स, डिसॉल्व्ड सॉल्यूट विल बी देयर. सो दिस ऑल विल बी अ साइटोसॉल. और जो उसमें ऑर्गेनेल्स पड़े हैं, दैट विल बी द ऑर्गन. जो छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, जो लिटिल ऑर्गन्स हैं, दैट विल बी ऑर्गन्स एंड दैट इज सराउंडेड बाय द दीज साइटोसॉल्स. So this will be called a cytoplasm. And then in the center there is a nucleus. The nucleus is also enveloped by the nuclear membrane. So nuclear membrane क्या करेगा? Nuclear membrane will separate the nucleus from the cytoplasm. So cytoplasm और nucleus के बीच में nuclear membrane है जो nucleus को अलग कर रही है. So these are the structure of the cell. So इस तरह से cell का structure बना हुआ है. Okay. Now cell known for the different and diverse function, and cell having the specific function. So we already learned these points and the different organelles. जो cells में organelles present हैं, even it could be mitochondria, endoplasmic reticulum, lysosomes, Golgi body, ribosomes, then centrioles will be there, centromere will be there, microfilament is there, cytoskeleton is there. So these all the cell organelles. छोटे छोटे जो little organs present हैं cell के अंदर, those who have surrounded by the some membranes, organelles, okay, inside the cell. So these are the topics of the cells is going to finish here. In the next class we will talk about the transport across the cell membrane. जो सेल मेम्ब्रेन अभी हमने डिस्कस किया है, द सेल मेम्ब्रेन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? How the transportation is possible through the cell membrane will be our next topic. Okay. Now see, the reference is there. We have a standard book like Tortura is there, Principle of Anatomy and Physiology. Bill and Melinda is there, Anatomy and Physiology. Robbins and Cotron we have, Pathological Basis of Disease. We have some web link is there like the innerbody.coms. Okay. So you can go through these book. Also one book is here, that will be Ross and Wilson. So you can go through the Ross and Wilson. So go through these books. You will find the amazing things. You will find the excellent content with the colorful diagram. So with the colorful diagram, is it quite easy to understand the component of the cells, different parts of the cells. Okay, as just I show you one diagram in the starting slides, that you can clearly identify the every single component, every single organelles of the cells. So that colorful diagram will help you
to ease the contents. Okay, so kindly go through these books, then we will meet again in the next class. Till that, thank you.